Hello children, good morning everyone. Today we are going to start lesson number 8, a short monsoon diary. These are the diary entries by the famous writer Ruskin Bond. So children, before start, first let's understand what is a diary. A diary is a record of personal experiences written day after day over a long period of time. You can also use a diary to note down things you plan to do immediately or in future. And one of the most famous diaries published as a book is the Diary of Anne Frank. So let's start this lesson. June 24. So June 24 was the first day of monsoon mist. All the birds fell silent as the mist climbed the hills. So first I am going to read this lesson and then explain you this lesson line by line. The first day of monsoon mist, and it's strange how all the birds fall silent as the mist comes climbing up the hill. Mist. What is the meaning of mist? Mist means water vapor near the ground in minute droplets, limiting visibility. वाटर के पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं जो थोड़े समय तक हमें दिखाई देते हैं, विजिबिलिटी होते हैं और उसके बाद हम उसे नहीं देख पाते हैं. Perhaps that's what make the mist so melancholy. Melancholy means very sad. Not only does it conceal the hills, it blankets them in silence too. Only an hour ago, the trees were ringing with bird song. बर्ड जो होते हैं वो जब चर्प करते हैं उनके सॉन्ग से जो ट्रीज होती है उन्हें रिंग करते हैं. एंड नाउ द फॉरेस्ट इज डेथली स्टिल एज दो इट वर मिडनाइट. थ्रू द मिस्ट Biju is calling to his sister. I can hear him running about on the hillside, but I cannot see him. So here the author could not see Biju because of the mist that concealed the hills. He could only hear Biju's voice but could not see him. Now, next page. It was the day of June 25. Some genuine early monsoon rain, warm and humid, and not that cold high altitude stuff we have been having all year. So on June 25, there was some genuine early monsoon rain. It was warm and humid. Contrary to the cold high altitude weather that the author had been experiencing all year. Here the author said the plant seemed to know it too, and the first cobra lily rears its head from the ferns as I walk up to the bank and the post office. Here you can see that image in this picture also. The poet is saying that when monsoon begins, the first cobra lily appears from the ferns. And when the seeds of cobra lily turn red, जब कोबरा लिली के जो सीड होते हैं वो रेड कलर में टर्न होते हैं, इट सिग्निफाइज दैट द मॉनसून इज कमिंग टू एंड तो उससे ये सिग्निफाई होता है कि अब जो मॉनसून सीजन है वो एंड होने वाली है. द मिस्ट अफोर्ड्स अ सर्टेनली प्राइवेसी. अ स्कूल बॉय आस्क्ड मी टू डिस्क्राइब द हिल स्टेशन एंड वैली इन वन सेंटेंस. अब एक स्कूल बॉय होता है वो ऑथर को बोलता है डिस्क्राइब करने के लिए कि जो हिल स्टेशन होता है एंड वैली होती है वो उसको वन सेंटेंस में डिस्क्राइब करने के लिए पूछता है. एंड ऑल आई कुड से, और पोएट क्या ऑथर क्या बोलते हैं, अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन. तो उसके आंसर में पोएट रिप्लाई करते हैं, वन सेंटेंस में रिप्लाई करते हैं कि अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन. नाउ लेट्स डिस्कस द डे ऑफ June 27. The rains have
heralded the arrival of some seasonal visitors, a leopard and several thousand lychees. Here, children, lychees जो होती है वो blood sucking worm होता है. It's called lychees. Yesterday afternoon, the leopard lifted a dog from near the servants' quarter below the school. In the evening, it attacked one of Biju's cows but fled on the approach of Biju's mother, who came screaming imprecations. As for the lychees, I shall soon get used to a little bloodletting every day. Bloodletting means losing blood. जब हमारी बॉडी में से ब्लड लॉस होता है, it's called bloodletting. Other new arrivals are the scarlet minivets. The females are yellow. और जो मिनीवेट्स होती है उसमें से जो फीमेल्स होती है, चिल्ड्रन, मिनीवेट मीन्स अ ब्राइटली कलर्ड एशियन कुकू, और उसमें से जो फीमेल्स होती है वो कैसी होती है, येलो होती है. फ्लिटिंग साइलेंटली अमॉन्ग द लीव्स लाइक ब्रिलियंट ज्वेल्स. नो मैटर हाउ leafy the trees, these brightly colored birds cannot conceal themselves. और ये जो मिनीवेट्स होते हैं वो ब्राइट कलर्ड कुकू होती है, एंड लीफी ट्रीज होने के बावजूद भी वो जो होती है वो कंसील क्लियर नहीं करती है. Although by remaining absolutely silent, they sometimes contrive to go unnoticed. Along come to a pair of drongos, unnecessarily aggressive, chasing the minivets away. So here the author is talking about the nature of silent miracles and life's little joy and regrets. First, he told about June 24 was the first day of monsoon mist. Then he talked about June 25, which brought early monsoon rain. It became warm and humid. A boy asked the author to describe the hill station and the valley, and Ruskin only said in one sentence that it could have been a paradise. Then the rain marked the arrival of some seasonal visitors. जो सीजनल विजिटर्स होते हैं, जो ओनली सम सीजन्स के ड्यूरिंग हमें दिखाई देते हैं, विजिबल होते हैं, लाइक अ प्रेइंग लेपर्ड एंड अ लार्ज नंबर ऑफ लीचीज. देन देर आर न्यू अराइवल्स ऑफ मिनीवेट्स एंड some drongos chasing those minivets also. Drongos means a songbird with a glossy black plumage. We can say it a forked tail and a stout bill also. वो भी एक बर्ड होते हैं. Here the poet discussed two different days, June 24, then June 25, and also third one is June 27. Then the poet is talking that a tree creeper moves rapidly up the trunk of the oak tree, snapping up insects all the way. Now that the rains are here, there is no dearth of food for the insectivorous bird. तो जो ऑथर है वो बोल रहे हैं ये डेर्थ मीन्स लैक और डेफिशिएंसी. देन द ऑथर इज सेइंग दैट द रेन्स आर हियर, देयर इज नो डियर्थ ऑफ फूड. और जो इंसेक्टिवोरस बर्ड होते हैं, इंसेक्टिवोरस मीन्स फीडिंग ऑन इंसेक्ट्स, जो इंसेक्ट के ऊपर फीड करते हैं, इंसेक्ट को फीड करते हैं, वी कॉल इट इंसेक्टिवोरस बर्ड. तो उनको फूड की कोई नीड नहीं होती है, कोई आवश्यकता नहीं होती है. So children, here we have discussed part 1 of this lesson. Now part 2 we will discuss in next session. Bye everyone. Thank you. Have a nice day.